Okay. Hello, everybody. This is the analog electronics session, YouTube session. And see, the analog electronics or analog circuit is very important and application based subject for electronics branch. Okay, it's very important subject for electronics branch. Without this, electronics branch is incomplete. Okay, and scoring subject for electrical branch, instrumentation branch. Okay, but see, in electrical engineering and in instrumentation engineering, this subject asked for up to 6 to 8 mark. Maximum time it is for 6 mark only, and if they will focus more, maximum it will be 8 mark. Okay, and the question asked in electrical and instrumentation is very simple question, very easy. You can score very easily on analog electronics if you will follow the entire GATE lecture provided by the GATE forum. You can score this 6 mark in maximum 5 minutes. You can score this 6 marks in maximum 5 minutes. ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये 6 मार्क स्कोर करने में, 6 मार्क्स स्कोर करने में. And for EC, electronics engineering, this subject is very important. You cannot skip this subject. आप इस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. And basically it is for 10 to 12 marks, minimum 10 to 12 marks. Okay, there are a lot of topics, a lot of concepts, very simple concepts they are asking. Okay, and very deep concepts. This subject is very important as point of interview also. यदि आप बहुत सारे PSUs examinations के लिए appear होंगे, यदि आप qualify करते हो based on GATE or other different examinations, DRDO, okay, then आपको एक इंटरव्यू फेस करना होगा. उस इंटरव्यू में, in that interview they will ask more question on analog electronics because this is a basic and application based subject. Okay, how it is application based subject? In EDC we are studying the internal structure of semiconductor, how semiconductor behaving, n type, how n type is forming, p type is forming, okay, each and everything. But in analog electronics, see, in EDC we are studying what? EDC में हम क्या पढ़ते हैं? n type कैसे बनेगा, p type कैसे बनेगा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अंदर में कैसे वो वर्क होता है इसका, कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है p से n and n to p, how the electrons are flowing from p to n and n to p. But in analog electronics we are not studying these things. We are studying application of the diode, just like a clipper. Clipper is one of the application of the diode, just like a rectifier, okay, just like a filter, okay, just like a clamper. Okay, these are the some applications of the diode we are studying in analog electronics. That's why this subject is very important. This subject is very important for us. Okay, so this subject is very important for GATE point of view and other point exam also. So don't skip this subject. And today we'll see some important tricks, important concepts related with the diodes. See, one problem is always asked on this diode.
Without studying the diode, we cannot go for the BJT, op-amp, because in many questions, in 2-mark questions, they are using a diode and BJT simultaneously. Diode and op-amp. Okay. So be focused on this subject. This subject is very, very important for us. This subject is very, very important for basically we can say that EC branch and scoring. Basically what happened, electrical students are avoiding this subject because this subject is not belonging to electrical engineering ना. That's why जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं. लेकिन होता क्या है, आपको राउंड में एट लास्ट आपका स्कोर क्या आया है इस पे आपको फोकस करना है. आपका स्कोर क्या आया है इस पे आपको देखना है कि क्या चल रहा है, कितना स्कोर आ रहा है. ठीक है, इसीलिए आपको फोकस करना होगा इस पे. ओके, गुड इवनिंग रितु. ओके, नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे फोकस करके पढ़ना है और देखना है, समझना है आज हम क्या क्या करेंगे. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर. इसको मैं रब कर देता हूं. सो प्लीज स्किप ना करें, कोई भी ब्रांच हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इसको आपको स्किप नहीं करना है और इसे पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्या होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. डायोड. डायोड स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, बेसिकली डायोड का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए. डायोड कैसे बिहेव करता है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड. सिंपल है, यह है डायोड का सिंबल, यह है डायोड. चलिए बहुत अच्छा. यदि ये डायोड आइडियल है, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड, फॉर आइडियल डायोड कट इन वोल्टेज इज 0. कट इन वोल्टेज बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको वी गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. वी गामा इक्वल्स टू 0. कट इन 0 होता है. और कट इन वोल्टेज क्या होता है, इट इज अ मिनिमम फॉरवर्ड बायस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डायोड इन ऑन स्टेट. व्हाट इज कट इन वोल्टेज, मिनिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डायोड इन ऑन स्टेट. ये में कम से कम क्या है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है जिससे डायोड किस में ऑपरेट हो, ऑन स्टेट में ऑपरेट हो. वो क्या होता है, 0 होता है. अब देखिए ये है डायोड का पी साइड और ये है डायोड का एन साइड. दिस इज अ पी साइड एंड एन साइड. ये प्लस ये माइनस. दिस इज वीपी एंड दिस इज वीएन. ओके, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम, P side is plus and N side is minus, and the potential drop across the diode is VD. Potential drop across the diode is VD. Therefore, C. VD equals to 0. VD equals to 0 or something else. See, one more. When this VD is greater than 0, why greater than 0? Because the cut-in voltage is 0. The cut-in voltage is 0. Means what will be the VD? VD will be VP minus VN. Why it is VP minus VN? Because see here, because P side is positive and N side is negative. That's why VD should be VP minus VN. So please put here VP minus VN is greater than 0. Therefore VP is greater than VN. Diode is forward bias. All this condition is diode is forward bias. That is short circuit. Short circuit means on switch. Short circuit means on switch. Short circuit means on switch. If you have any doubt, please ask me. In this session, if anybody have a doubt, please ask me. Okay. Now, when this VD is less than 0, what happened? VP minus VN is less than 0. Therefore, what happened? VP is less than VN.
Means all this condition, diode is reverse bias, open circuited, and off switch. Off switch. Diode will operate in off state. Okay. Ideal diode means what? Cut-in voltage 0. Cut-in voltage means 0 means what? VD equals to 0. VD equals to 0 means what? Same potential is applied. Okay. Now the next thing is, when VD is greater than 0, diode is forward bias. When VD is less than 0, diode is reverse bias. And when the VD is equals to 0, what happened? VP minus VN is equals to 0. Means VP equals to VN. Then please tell me the name of this state. Please, anyone tell me the name of this state. Can anyone? Please put a comment. Can anyone? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा इस स्टेट को क्या कहते हैं? कोई मुझे बताएगा इस स्टेट को क्या कहते हैं? चलो कोई बात नहीं, इसको इस स्टेट में डायोड अनबायस्ड होता है. इसमें फॉरवर्ड, इसमें रिवर्स. डायोड इज अनबायस्ड and this is again open circuited and this is off. If you will apply the same potential at both ends, then the current flowing through that point is 0 because the potential difference is 0, and when the potential difference is 0, the diode will be unbiased. Okay. So based on this concept, this is an ideal diode. Now we will go for practical diode. Now we'll go for practical diode. Practical diode. What is mean by practical diode? See, practical diode में क्या होता है? ये जो कट इन वोल्टेज है वो V गामा के बराबर होता है, और V गामा हमें पता है क्या क्या होता है? 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, and this is called as cut in voltage. Cut-in voltage. Okay, in this case, VD is what? VP minus VN. VP minus VN, and VP minus VN equals to V gamma. VP minus VN equals to V gamma. Okay, in this case, this V gamma is something 0.6 volt, or somewhere it is written 0.7 volt. See, दोनों में बहुत डिफरेंस है. 0.6 भी होता है, 0.7 भी होता है. 0.6 होता है ओनली कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, और ये होता है एक्टिव कट इन, एक्टिव कट इन वोल्टेज, एक्टिव कट इन वोल्टेज. दोनों में बहुत फर्क है, डिफरेंस है. क्या होता है? जब 0.6 वोल्ट होता है तो डायोड सडनली जस्ट जंक्शन ब्रेक होता है, मींस पी साइड से एन साइड जाता है. और क्या होता है? जब एक्टिव कट इन होता है, इसका मतलब यह है कि डायोड फुल्ली टर्न ऑन हो चुका है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैरियर्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड एन साइड टू पी साइड. ओके, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर नाउ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट इन एंड एक्टिव कट इन? ओके, कट इन एंड एक्टिव कट इन क्या होता है? तो आइडियल डायोड के केस में क्या होता है? ये V गामा 0 होता है, बट प्रैक्टिकली 0.6 and 0.7. 0.6 is only cut in, but this is active cut in. If in any competitive examination, if they will ask what is the active voltage, what is the active cut in, if anybody will ask what is active cut in, and option A will be 0.6, option B will be 0.7 volt, option C will be 0.5 volt, and option D will be 0.65 volt, then option B will be the right answer. Option B will be the right answer. Okay, now we go forward and see. First case, when this voltage VD is greater than V gamma, or VP minus VN is greater than V gamma, then diode is forward bias. Okay, short circuit on switch. In ideal case, what is this? V gamma is 0. That's why I have written when VD is greater than 0. But in this case, it is not 0. It is some practical value.
Second case, see here, when VD is less than V gamma, means VP minus VN is less than V gamma. Diode is reverse bias, open circuit, off switch. Okay, and at last, third one, when VD is equals to V gamma, VP minus VN equals to V gamma, diode is unbiased, means open circuit, means off. Is it clear? I think everyone understood this concept. Okay, everyone understood this concept. Okay. Now we'll solve this numerical. We'll solve the first numerical based on this concept. This is a numerical, and I will solve this numerical for all of you. See, this is a first numerical. I will solve it for you. Now see, what is our concept? How you will solve such type of numerical? This numerical is asked in a GATE examination, and how we'll solve this numerical? Please like the video, subscribe the channel, because GATEFORUM is continuously posting some useful videos for all of you. ओके, अब देखिए, इसमें दिया है V on equals to 0.7 वोल्ट, मतलब कटिंग वोल्टेज दिया गया है और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 क्या होगा? तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले अज्यूम करना है, लेट डायोड इज इन रिवर्स बायस, मींस ओपन सर्किट. यू हैव टू अज्यूम, आपको अज्यूम करना है, यू हैव टू अज्यूम that the diode is operating in a reverse bias first. and हम क्या करेंगे, जिसको हमने assume किया है कि डायोड रिवर्स बायस में है, डायोड रिवर्स बायस है, ओके हमने assume किया है कि डायोड रिवर्स बायस में है, तो हम ये चेक करेंगे, we'll try to find out that our assumption is right or wrong. We'll try to find that our assumption is right or wrong. हम ये कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि हमारा जो assumption है, जो हमने assume किया है, वो सही है या गलत है, सही है या गलत है. ओके, तो डायोड ऑफ है, ओपन सर्किट है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम इस डायोड को ना, ये 0.7 दिया, इसका मतलब ये डायोड प्रैक्टिकल डायोड है, आइडियल डायोड नहीं है. तो कटिंग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना. अब उससे पहले एक और पॉइंट यहां ध्यान से देखो. इफ दिस इज अ डायोड, practical diode, then what we'll do, if you want to convert in an ideal diode, you have to separate this in a such a manner. This is now ideal diode and this is a cut-in voltage V gamma. इस टाइप से आप इसको अलग कर सकते हो. अब देखो क्या होगा, सेम कंसेप्ट है. यदि डायोड ऐसा रहे तो आपको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, V गामा, और यह है आइडियल डायोड. तो प्रैक्टिकल डायोड से आइडियल डायोड में हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया है. ओके, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आपने इसको चेंज किया है, करना क्या है, ये पी साइड है ना, ये पी साइड है, ये देखो ये पी साइड है, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इधर लगा दो. यदि इस साइड लगाना है तो ये एन साइड है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, निगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये टेक्निक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डायोड ऐसा है, अब इसको कन्वर्ट करना है, डायोड कैसा है, कुछ ऐसा है, प्रैक्टिकल डायोड, इसको आइडियल डायोड में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, ये इस साइड लगाना तो निगेटिव पॉजिटिव. क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है. अब डायोड को क्या करना है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसको आइडियल डायोड बनाना है. तो आइडियल डायोड कैसे बनेगा,
आइडियल डायोड बनाने के लिए एक यहाँ पे 0.7 का वोल्ट लगा देंगे, 0.7, और ये हो गया आइडियल डायोड। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इसको ओपन सर्किट करेंगे। तो अब देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, टू किलो ओम, 6 किलो ओम, प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट हो गया, ये I2 हो गया। ओके, अब ये जो डायोड है ये है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अब ये आइडियल डायोड है, तो कैसे चेक करते हैं जरा ये भी समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आना कि हम चेक कैसे करते हैं, चेक करते आना चाहिए आपको। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये सही है कि नहीं। अब देखो, अब ये तो पाथ ओपन हो गया, तो यहां तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट हो गया है, तो करंट कहां से फ्लो होगा, यहां से फ्लो होगा। करंट विल फ्लो थ्रू दिस loop, and the in this loop the current is I2, because see same current I2 is flowing, right? I am assuming the current I is flowing. Now this I will be 2 divided by 8. 2 divided by 8, and this current is 1 by 4 मिली एम्पियर। ओके, ये करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, ये चेक करना है जो हमारा assumption सही है कि नहीं। इफ my assumption is correct, then my answer is also correct. Okay, I cannot comment that this answer is right now. Right now I cannot comment that this answer is right. Why? The reason is that I have to verify our assumption. So डायोड VD क्या होगा, अब देखो हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ का भी वोल्टेज निकालना पड़ेगा। लेट ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो हम चेक करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, लेट इस पोटेंशियल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ Vx, और Vx क्या होगा, द करंट I is flowing 2 into 1 by 4, it's 1 by 2.5 मिली एम्पियर, 0.5 into 2। अब जब इस लूप में केवीएल लगाइए, इस लूप में केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस Vx प्लस 0.7 प्लस Vd इक्वल्स टू 0, देन Vd इक्वल्स टू Vx माइनस 0.7, Vx is 0.5 and it's 0.7, that is minus 0.2 volt. It means what? The voltage drop across diode. Now see, I have made this practical diode as an ideal diode, means I have to check with respect to 0. With respect to 0, so my answer is Vd is less than 0, because it's a minus 0.2 volt now. Vd is less than 0, hence diode is reverse bias open circuit, means my assumption is correct. My assumption is correct. जो भी मैंने assume किया था वो बिल्कुल सही निकला। इसीलिए क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने assume किया है वो बिल्कुल सही निकला। समझ में आया? यदि मेरा assumption सही था तो अब ये देखो, ये करंट और ये करंट सेम है क्योंकि एक ही लूप बचा। Then this is the value of I2. This is the value of I2. This is the answer. In this way we can solve many numericals. Okay, I think all of you understood this. Please note down this. If anybody have a doubt, please ask me. Anybody have a doubt, please ask me.
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is also asked in a GATE examination. Copy. Okay. This is a question. This is our question. Problem. Okay, now see, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से वही कंसेप्ट यूज करना है। ओके, डायोड को हम फिर से एज्यूम करेंगे कि ऑन है या ऑफ है। तो डायोड का एज्यूम करना है ऑन है कि ऑफ है। अब देखिए, इसमें सेम टेक्निक जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया, तो क्या कह रहा है? In the circuit shown below, diode has a barrier potential, means again it's a 0.7 volt is given, barrier voltage 0.7. There will be a no forward current, there will be a no forward current. See, this word is important. No forward current flows through the diode if VDC is greater than. VDC means voltage across the diode. What will be the range across the voltage across the diode that there will be a no any current flowing? हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेंज होगा, वोल्टेज बड़ा होना चाहिए कि करंट फ्लो ना हो, ये पूछ रहा है। डायोड ऑफ हो, नो करंट मींस व्हाट? डायोड शुड बी ऑफ, डायोड शुड बी ऑफ, तब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। हमें ये चेक करना है।
ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले डायोड को ऑफ एज्यूम करना है। ऑफ एज्यूम करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। सॉरी, ये VDC ये नहीं होना चाहिए, VDC should be this. What should be the range value of this VDC? This is the potential across the diode VD, and this is VDC. This is 2 volt. 2 वोल्ट यदि ऐसे कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा है कुछ इस तरीके से। किसी भी पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है? उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक। किसी भी पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है? उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक। ठीक, किसी भी पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक। ठीक है, अब देखिए अब यहां पे इसको हमें चेक करना है, तो क्या होगा? हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे। -2 प्लस VD, और एक पॉइंट VD इज 0.7 वोल्ट ना, VD इज 0.7 वोल्ट, इसीलिए इस आइडियल को, सॉरी इस प्रैक्टिकल डायोड को पहले आइडियल में चेंज करना होगा। 1.7 यहां भी आएगा। ठीक है, तो प्लस 0.7 प्लस दिस VD प्लस, अब देखिए यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 500 ओम। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। देन प्लस VDC by 2 equals to 0. Then VD equals to 1.3 minus VDC by 2. अब क्या बोल रहा है? कंडीशन दिया है नो फॉरवर्ड करंट, नो फॉरवर्ड करंट थ्रू डायोड, नो फॉरवर्ड करंट थ्रू डायोड। डायोड से कोई भी फॉरवर्ड करंट नहीं फ्लो रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? डायोड इज VD इज लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है? उसको 0.7 से, सॉरी आइडियल बना दिया, तो लेस देन 0। वी हैव मेक द डायोड इज आइडियल, so it should be less than 0, means 1.3 minus VDC by 2 is less than 0. 1.3 is less than VDC by 2. Therefore 1.3 into 2 is VDC, that is 2.6 VDC. This 2.6 VDC means VDC should be greater than 2.6 volt. VDC should be greater than 2.6 volt. VDC should be greater than 2.6 volt. Flows VDC should be greater than 2.6 volt. This is the right answer. Option D is the correct answer. VDC should be greater than 2.6 volt. Okay, VDC should be greater than 2.6 volt. If anybody have a doubt, yeah, Vinay Chaudhary, I have assumed diode off circuit. You have always, okay, you have to always assume diode is in off circuit initially, and after that you have to check the condition. सबसे पहले आपको डायोड को ऑफ कंडीशन ही मानना है. This is a best method and accurate method. उसके बाद आप उसको अप्रोच करना है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज पुट इन अ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. Okay, next. Next question. This question was asked in electrical engineering and EC both.
copy, I will paste it. Next question. Okay, see this question. What is the question? Find which diode is on or off. Which diode is on or off. कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है, ये आपको पता करना है. बहुत सारे डायोड हैं, VD1, VD2, VD3, ये सब बहुत सारे डायोड हैं. थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं ये सब VD1, VD2, VD3 यहाँ पे नहीं दिया गया है, और दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्लस साइड इसलिए ऊपर प्लस माइनस ऐसे करके आपको दिया गया है. अब इसमें चेक करना है कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है. ये बहुत सिंपल है. आप क्या करेंगे, सारे के सारे डायोड को ऑफ मान लेना है. इनिशियली सभी और सभी के सभी डायोड को क्या मान लेना है, ऑफ मानना है. ओके, तो लेट D1, D2, D3 इक्वल्स टू रिवर्स बाइस इक्वल्स टू ऑफ. सभी को हमको क्या करना है, ऑफ मान लेना है. ओके, सभी के सभी को ऑफ मान लेना है. उसके बाद आपको चेक करना है ऑफ करके नेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा. तो चलिए हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. ऑफ करने के बाद क्या होगा, जस्ट अ मिनट. ऑफ कर दिया मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसा. ये भी ऑफ और ये हो गया करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट, 1 ओहम, 1 ओहम, 1 ओहम, 10 वोल्ट. ये हो गया VD1, ये हो गया VD2 और ये हो गया VD3. अब आपको चेक करना है कि कौन सा डायोड ऑफ है और कौन सा ऑन है. मैंने मान लिया सबके सब ऑफ है और चेक करके देखते हैं. यहाँ पे दो नोड है. लेट अज्यूम दिस इज अ नोड, फर्स्ट नोड, नोड A, and this is always a reference node. Apply the KCL at node A. Apply KCL at node A. अब A पे ही क्यों ऐसा अप्लाई किया वो मैं आपको बताता हूं. अब देखिए, हमें क्या करना है, जैसे ही आपने K पे अप्लाई किया, A पे अप्लाई किया, तो क्या होगा, दिस VA माइनस दिस 10 वोल्ट बाय डिवाइडेड बाय 2 प्लस VA बाय 1 इक्वल्स टू 5. सी, ये ब्रांच ओवर VA माइनस 10 बाय 2, उसके बाद ये ब्रांच, एंड दिस 5 एम्पियर इज इनकमिंग करंट. अब देखना है कि हमें क्या मिलता है यहां से. ओके, जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो VA माइनस 10 प्लस 2VA इक्वल्स टू 10, देन VA इक्वल्स टू 20/3 वोल्ट. अब VA का मतलब क्या है, यहां से यहां तक लेके ये VA हो गया, तो सेम VD3 भी हो जाएगा. ओके, अब मैं एज्यूम करता हूं यहां से एक करंट निकालने की कोशिश करता हूं, I. अब देखो ये करंट I क्या होगा, कहां से निकला है ये, यहां से, तो I क्या होगा, 10 माइनस 10 माइनस दिस पॉइंट VA बाय, यही करंट ऐसे फ्लो होगा,
by 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Okay. This is I. And VA is what? 10 minus 20 by 3 by 2. If you will calculate this, you will get 10 by 6. I equals to 10 by 6. Okay. This is I. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये I मिल गया तो यहां से ये वोल्टेज मिल जाएगा, यहां से ये वोल्टेज, क्योंकि यहां का करंट मिल गया, यहां का वोल्टेज मिल जाएगा, ये वोल्टेज। सो यदि मैं यहां केवीएल लगा दूं तो क्या आएगा? -10 प्लस 1 इंटू 10 by 6 plus VD1. Everyone got this point? Equals to 0. Therefore, VD1 equals to 10 minus 10 by 6. It's a positive quantity. Hence, VD1 is what? Greater than 0. VD1 is greater than 0. Means what? Diode D1 is forward bias. I think all of you understood this. Diode D1 is forward bias. अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया तो अब क्या करेंगे? इसको हम शॉर्ट सर्किट एज्यूम करेंगे. If you have any doubt between this numerical, between this process, please ask me. Okay. Now, diode is forward bias. इसीलिए हमने क्या किया? इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. जैसे ही इसको शॉर्ट सर्किट किया, अब हम VD2 चेक करेंगे. VD2 क्या होगा? Nothing but the voltage drop across this one. VD2 is nothing but voltage drop across this 1 ohm resistance. ये VA पता है आपको यहां से यहां तक, तो ये वोल्टेज भी मिल जाएगा. तो देखिए क्या होगा जब आप KVL लगाओगे तो क्या मिलेगा? यहां तो 0 है तो प्लस VD2 प्लस VA इक्वल्स टू 0. तो VD2 इक्वल्स टू माइनस VA, that is minus 20 by 3. It means what? VD2 is less than 0. Diode D2 is reverse bias. D2 is reverse bias. This should be open circuited. Okay. This is a process. I have assumed, and what I have getting, you have to change. You have to change in the circuit. Means diode is on. Diode on था तो हमने क्या किया? इसको शॉर्ट सर्किट किया. Diode off है तो हमने क्या किया? इसको ओपन सर्किट किया. अब हमें चेक करना है VD3. VD3 कैसे चेक होगा? तो VD3 चेक करने के लिए माइनस VA और माइनस VD3 आपको इस लूप में केवीएल लगा देना है. तो देखिए इस लूप में केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा? माइनस VA माइनस VD3 इक्वल्स टू 0. तो VD3 इक्वल्स टू माइनस VA. Again minus 20 by 6. Sorry, 20 by 3. 20 by 3. Then again VD3 is a negative quantity, means VD3 is less than 0. Diode D3 is reverse bias. Diode D3 is reverse bias. In this way, you can solve any numerical asked in the GATE examination based on diode. मुझे लगता है आप इस तरीके से सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंट वे से आप सॉल्व कर सकते हो. मोस्ट एक्यूरेसी है इस मेथड में. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे. वेरी गुड स्पीच सतीश गोयल. यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. कितना सिंपल इजी वे है. ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था. प्लीज राइट डाउन दिस. Next. Next. Okay. Next problem. We'll discuss next question. देखते हैं क्या होगा.
good. These questions also asked in a GATE examination. अब देखिए क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. If diode D is ideal, then the voltage VAB across 1 kilo ohm is. Voltage VAB means voltage drop across this 1 kilo ohm resistor is simple. What will be the solution? Let diode reverse bias off. If the diode is reverse bias off, what you have to make? आपको क्या करना है? आपको उसे रिवर्स बाइस करके एज्यूम कर लिया और एक सर्किट ड्रॉ करना है, इक्विवेलेंट सर्किट. और इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? कुछ इस प्रकार का होगा. ये होगा प्लस माइनस VD, ये है 1 किलो ओम रजिस्टर और इसके क्रॉस का वोल्टेज पूछ रहा है VAB, और ये हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया 5 किलो ओम, ये हो गया 1 मिली एम्पियर. ओके, ये हो गया 1 मिली. ओके, अब ये चेक करना है. तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मैंने जो डायोड को एज्यूम किया है वो सही है या नहीं. व्हाटएवर वी हैव एज्यूम्ड इज करेक्ट और सबसे पहले चेक करना है. चेक करते हैं. जैसे ये करंट फ्लो हो गया तो किलो मिली कैंसल, ये 5 वोल्ट हो गया. अभी फिलहाल क्या है, अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट द सर्किट इज ओपन ना, मींस देयर विल बी नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 वोल्ट. 3 वोल्ट के द्वारा, from 3 volt there is no any current is flowing, so here the voltage will be 0. right now the voltage is open. इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ तो -3 plus VD and plus 5 equals to 0. So VD equals to 5 minus 5 plus 3, it's a -2 volt. VD is -2 volt. -3 plus VD plus 5, then VD 5 plus 3. Okay, it means what? इसका मतलब ये है कि VD is less than 0, means diode is reverse bias, open circuit. हमने जो भी assume किया है वो क्या है, सही है. Whatever you have assumed is right. इसीलिए यही सर्किट होगा. एंड अब इस केस में क्या होगा, यहां से कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल सर्किट क्या है, ओपन सर्किटेड है. Therefore, the voltage drop across 1 kilo ohm resistor is 0. VAB is 0. अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है 1 किलो ओम से. क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया था डायोड को ऑफ, और जब हमने चेक किया, when you have proved that the diode is open circuited, इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा assumption ये करेक्ट है, this circuit is right circuit. इसीलिए यहां से कोई 0. Okay, please note down this. Please note down this. If you have any doubt, please ask me. Fast. Okay. If anybody have a doubt, please ask me. Okay. Next we'll solve other questions. This question. Fifth question. Copy.
Let's see, this is a question. This is a question asked in the GATE examination. Okay. See, diode has V on equals to 0.7 volt. If Vi equals to 5 sine omega t volt, then the minimum and maximum value of V naught are respectively. In that, first thing is, what is Vi? Vi is sinusoidal waveform 5 sine omega t. It means what? It is a sine wave, just like this. This is a 5 volt and this is minus 5 volt. Means this is the positive, na? It's a maximum positive voltage. This is a minimum. Means if you want to calculate maximum V naught, then we have to go for this value, and for minimum we have to go for this value input. This is the maximum and this is a minimum. Okay, now see, it's very simple. Then Vi, first we have to assume the Vi. Let diode is, first case, Vi equals to 5 volt and, okay, let case first, Vi equals to 5 volt. It will give a maximum of V naught. ये क्या देगा आपको? Maximum V naught देगा. Okay? तो जब आपने 5 वोल्ट बनाया इसको, ये सिंपल सा फिगर है, कॉपी पेस्ट. अब देखिए, नो प्रॉब्लम, इसको यहीं रखते हैं, इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं. ओके, अब इसमें कहना क्या है कि हमें वीडी चेक करना होगा कि हमारा वीडी सही है या नहीं. तो अब देखिए वीडी क्या होगा, ये प्लस ये माइनस. तो सबसे पहले हमें इसे ओपन सर्किट करना होगा और वीआई हमने क्या माना, 5 वोल्ट. तो यदि ये ओपन सर्किट है तो क्या होगा, ओपन सर्किट में फिगर कुछ ऐसा होगा, ये ओपन, ये, और कुछ इस प्रकार. ओके, 5 वोल्ट, दिस इज वीडी, ये प्लस 2 वोल्ट. और वो क्या कह रहा है, एक मिनट, वो कह रहा है 0.7 वोल्ट है. तो आइडियल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड भी करना होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस चाहिए. और चेंजेस ये होगा कि ये प्लस 0.7 वोल्ट भी ऐड होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 वोल्ट, यहाँ पे 0.7 वोल्ट, और ये हो गया वीडी. ओके, अब इसमें आपको केवीएल लगा देना है. You have to apply KVL in this loop. But what is the problem? A student doing a mistake. See, this is a point where the student doing a mistake. Now this circuit is open circuited. Now the current through the 1 kilo ohm will be 0. No current will flow through this circuit right now. Okay, so if you apply the KVL, it will look like this. 5 volt means what? Here it is a 5 volt. और ऐसे जब केवीएल लगाओगे तो -5 प्लस 0.7 प्लस वीडी प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Therefore VD equals to 5 minus 2.7. It's a 2.3 volt.
ओके, इसका मतलब क्या है? VD इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, hence diode is forward bias. Diode is forward bias. It means that whatever we have assumed that what? Assumption is diode is reverse bias ना, ओपन सर्किट. हमारा assumption क्या था? डायोड रिवर्स बाइस है और ओपन सर्किट है. इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी हमने एज्यूम किया वो गलत था. जो भी हमने एज्यूम किया वो गलत था. इट्स रॉन्ग. जो भी हमने एज्यूम किया वो गलत था, वो सही नहीं था. इसीलिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए हमें एक नया सर्किट बनाना होगा जिसमें डायोड क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो. डायोड क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो. तो चलिए डायोड को शॉर्ट सर्किट करके नया सर्किट बनाते हैं. जो भी हमने एज्यूम किया था वो गलत था. ये शॉर्ट सर्किट हो गया डायोड, और यहाँ पे ये 2 वोल्ट लग गया. और ये हो गया V0. This is short circuit 0.7 volt 1 kilo ohm, 5 volt 1 kilo ohm, and it's a 2 volt. और यहां से हमें I निकालना है. ये I क्या आएगा? ये I आएगा 5 minus 0.7 minus 2 divided by 2. क्या होगा? 5 minus, इस कुछ इस तरीके से हम इसे लिखेंगे. यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, देन ये आएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 2. इट्स और डायरेक्ट मिल रहा है 2.3 मिली एम्पियर. 2.3 मिली एम्पियर आने के बाद अब आपको V0 निकालना है. तो प्लीज अप्लाई द KVL इन दिस लूप. इट वुड बी माइनस V0 प्लस 1 इंटू 2.3 बाई 2, क्योंकि ये करंट और ये रजिस्टर मिलके क्या हो जाएगा? वोल्टेज. ओके, तो यहां पे क्या आएगा? 2 प्लस 0.7 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसके हिसाब से जब ये V0 आएगा, तो V0 इक्वल्स टू यहां पे 3 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 3.85 वोल्ट आएगा. 3.85 वोल्ट आएगा. ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3.85. अब ऑप्शंस में जाएंगे तो 3.85 मैक्सिमम वैल्यू 3.85. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. डायरेक्ट टिक कर सकते हो. देयर इज नो एनी नीड टू चेक द मिनिमम वैल्यू इन अ गेट एग्जामिनेशंस, because only one options have a 3.85 volt. Maximum value is 3.85 volt. Okay, only single option have a 3.85 volt. लेकिन but here we'll check for both maximum and minimum. तो minimum के लिए क्या करोगे? minimum के लिए हमें अब क्या करना है? केस 2 के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप VI इक्वल्स टू -5 वोल्ट मान लें. ओके, तो जैसे ही -5 मानेंगे तो ये जो सर्किट है देखिए यहां पे क्या होगा? ये हो गया -5. ओके, और डायोड को अगेन आपको ओपन सर्किट मानना है. तो चेक करते हैं. देखो, अब सबसे सिंपल कंसेप्ट है. सी, यहां देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है. this is a circuit. Here it is 2 volt and this is VO. Okay, this is 2 volt, this is 0.7 and this is -5. Here it is a -5 volt. ये 1 किलो ओम है और ये 1 किलो ओम. अब हो क्या रहा है? यहां देखिए, ये जो इनसे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. देयर विल बी नो एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 1 किलो ओम रेजिस्टर्स.
There is no any current flowing through this 1 kilo ohm resistor right now. Okay. So what happened here? This minus 5 volt will appear here. Or if you want to subtract, this is minus na, means here it will be a minus 5.7 or minus 4.3. Here it will be a minus 4.3 and here it will be a 2. इसका मतलब ये होता है कि यदि आप इस पॉइंट का वोल्टेज चेक करते हो तो ये क्या हो गया Vp और ये क्या हो गया Vn. Vp 4.3 होगा और Vn जो है वो क्या हो गया 2 हो गया. सॉरी माइनस 4.3 और 2. इसका मतलब क्या हो गया Vp is less than Vn. Diode is reverse bias, means diode is open circuit. You can directly check it. You can directly check it. There is no any problem in this. Is there any doubt? Please ask me. तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा. रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट होगा. अब देखो जब डायोड रिवर्स बायस हो गया तो अब केवीएल लगा दो. तो माइनस वी नॉट प्लस 0.7 ओके प्लस 0.7 और सी देयर इज नो एनी नीड टू सॉल्व दिस ना. अब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा. देयर विल बी नो एनी करंट, मींस दिस माइनस 5 वोल्ट will directly appear here. Therefore VO will be minus 5 volt. VO will be minus 5 volt. This is a minimum value and this is a maximum value. Option C is a right answer. Option C is a right answer. Option C is a right answer. Okay. Option C is a right answer. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. क्या हमारा मेथड है, क्या हमारा कंसेप्ट है. नेक्स्ट प्लीज नोट डाउन दिस. Okay. Next question. This will be our next question. Okay. This is the next question. Please focus on this question. This question is very, very critical and tricky question. See, in this circuit, in the circuit shown below, assume that the voltage drop across a forward bias diode is 0.7 volt. In the circuit shown below, assume that the voltage drop across a forward bias diode is 0.7 volt. ये जो दिख रहा है डायोड सर्किट है उसमें सभी के क्रॉस 0.7 वोल्ट है. द थर्मल वोल्टेज Vt इक्वल्स टू Kt by Q इक्वल्स टू 25 मिलीवोल्ट. द थर्मल वोल्टेज Vt इक्वल्स टू Kt by Q 25 millivolt. The small signal input Vi equals to this cos omega t, where Vp this is 100 millivolt. इसका मतलब ये जो Vi है वो कुछ ऐसा है 100 millivolt. We can write here millivolt cos omega t. This is actual input. ये Vi और DC है.
ओके, तो हमें क्या निकालना है, VDC प्लस VAC दोनों हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा, VDC प्लस VAC। तो यहाँ पे ये तो गिवन पार्ट था, अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्चुअल क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। अब देखिए एक्चुअल क्वेश्चन था ये दोनों क्वेश्चन है। कॉपी, ये जो गिवन डेटा था उसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द बायस करंट आईडीसी थ्रू द डायोड इज। अब ध्यान ये देना है कि जब कभी भी बायस करंट यूज रहे, वर्ड बायस, इसका मतलब वो डीसी वैल्यू पूछ रहा है। वर्ड बायस का मतलब क्या पूछ रहा है, डीसी वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, वर्ड बायस का मतलब डीसी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, अब डीसी वैल्यू पूछ रहा है तो डीसी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डीसी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होगा। मैं ये पार्ट हटा देता हूं। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, डीसी निकालते वक्त एसी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। जब कभी भी आप डीसी निकालोगे तो एसी को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, और इक्विवेलेंट 0.7 वोल्ट सभी डायोड रिप्लेस होगा कुछ इस तरीके से। ये 0.7 0.7 0.7 0.7, और यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, VDC। क्यों, क्योंकि आपने डीसी किया है, ये है 12.7 वोल्ट और ये है 9900 ओम। ये हो गया। ओके, अब देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। हमें निकालना क्या है, करंट आईडीसी थ्रू द डायोड, करंट निकालना है, दिस आई। तो आई क्या होगा, आई होगा 12.7 माइनस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7, कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 9900। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 1 मिली एम्पियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। यदि किसी को कोई डाउट है तो फास्ट पूछिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं आगे, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एसी आउटपुट वोल्टेज VAC इज, द एसी आउटपुट वोल्टेज VAC। अब यहाँ पे जब एसी इक्विवेलेंट निकालते हैं डायोड का तो उसका क्या आएगा, एक रजिस्टर आएगा। तो हम चारों डायोड को क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। अब डीसी हट जाएगा, डीसी विल बी रिमूव, नाउ एसी विल बी कंसीडर्ड। और चार डायोड RD, RD, RD and RD. Or see, it is given in the question itself, the 4RD, 4RD resistance. $100. Okay. Now
25. Please solve this. Okay. How you will calculate RD? First, our aim is how you will calculate RD. So RD is calculated by using the method VT, thermal voltage by IDC. VT, thermal voltage by IDC. Thermal voltage 25 millivolt is given. IDC is 1 milliampere. Milli gets cancelled. It's a 25 ohm. And here you have to calculate the VAC. Here it is VI. So VAC equals to VI into 1, 2, 3, 4. 4 RD, 4 into 25. And divided by total resistance 9900 plus 100. Okay. And it's a 100 millivolt. Now, see in the question itself given, it is 100 millivolt cos omega t. 100 millivolt into cos omega t. This is VI into 100 divided by 9900 plus 100. It means what? See, this is 100 millivolt cos omega t into 100 divided by 10,000. And this two gets cancelled. This and this get cancelled. Means here will be 1 cos omega t milliampere. Sorry, millivolt. This millivolt. This millivolt. This is the actual answer. I think all of you understood this concept. What I have taught right now. If you have any doubt, if anybody having any doubt, please ask me. Put in the comment. यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, कमेंट में पूछो क्या डाउट है, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेक्टिव लेक्चर एज पॉइंट ऑफ गेट. और ये जो अरेंजमेंट किया है गेट फोरम ने, ये बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है बच्चों के लिए. एग्जाम से जस्ट पहले एक क्विक रिवीजन, एक क्विक इम्पैक्ट on some important concept. Okay, and if you want a detailed subject, so please join the Gate Forum, e-classes, e-gate. वहां पे सारा आपको डीप में एक अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म, एक डिजाइन सिलेबस पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा. यदि आप डिटेल चाहते हैं तो हर एक कंसेप्ट, हर एक प्रॉब्लम. Okay, I think there is no any doubt. So we move towards the next numerical. And some questions we'll discuss apart from the gate. Then this is a question.
Okay. These are the options. See. एंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द गिवन सर्किट एट अ वेवफॉर्म फॉर द इनपुट वोल्टेजेस। इनपुट वोल्टेजेस, the diode in the circuit has a cut-in voltage V gamma equals to 0. यदि V gamma 0 दिया है, if the V gamma is 0 given, means diode is ideal. The waveform of the output voltage V naught is, the waveform of the output voltage V naught is, this concept is based on the clipper. Okay. यदि आप पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि ये क्या होगा, ये आंसर कहां पे जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ये यहाँ पे जुड़ा होगा, ज्वाइंट होगा, मिस्टेक हो गया कॉपी का। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज ट्राई करिए आप। So please try. देखिए अगेन आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू assume that the diode is off. If the diode is off, this is open circuited, this will be open circuit. एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। चलिए अभी आपको प्रैक्टिस करना है। इफ यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यदि आपने पूरा प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन जस्ट 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, 20 to 30 सेकेंड, मैक्सिमम हाफ मिनट। 2.2 किलो एंड गेट फोरम में जो पूरा रेगुलर क्लासेस जिन्होंने किया है, they can solve within a 30 seconds this question without doing anything, lot of calculations. Okay, this is VD. now अब हम देख सकते हैं यदि यहाँ VI अपीयर हो रहा है, ये स्क्वायर वेव है ना, this is इनपुट स्क्वायर वेव, means maximum 20 वोल्ट एंड मिनिमम -5 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए जब डायोड ऑफ है, लेट डायोड इज रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में क्या है, Vp इज लेस देन Vn। अब डायोड कब ऑफ रहेगा, Vp Vn। अब देखो यहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा ना, जब आप इसको ओपन किया तो ये जो 5 वोल्ट है, दिस 5 वोल्ट विल डायरेक्टली अपीयर हियर, दिस 5 वोल्ट विल डायरेक्टली अपीयर हियर, एंड यहां पे means when the Vi is less than the 5 volt, this is Vn ना, this point is Vn। तो जब ये डायरेक्टली अपीयर होगा तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर राइट नाउ। यहाँ क्या होगा, ऑफ हो जाएगा ये, और जैसे ही ऑफ होगा तो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट, देन व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, Vo विल बी 5 वोल्ट। Vo will be 5 volt. Oh, sorry, very sorry. Just a minute. See. Oh, just a minute. Diode is reverse bias. When the diode is reverse bias, when this Vi is less than Vp is less than Vn. Okay, Vp is less than Vn. What is Vp? Vp is this na. This is Vp. Means Vi, because Vi is directly appearing here, and Vn is 5 volt. Means when Vi is less than 5 volt, diode is off. Okay, diode is off. And when this Vi will be greater than 5 volt, diode is on. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस न्यूमेरिकल में। क्या कंफ्यूजन है, हमको चेक करना है -5 से 20 के बीच में क्या रिस्पॉन्स होता है, -5 से 20 के बीच में क्या रिस्पॉन्स होता है।
ओके, तो सबसे पहले है when diode is off, Vi is less than 5 volt. When diode is off, reverse bias, diode is off, Vi is less than 5 volt. And in this case, Vo equals to what? 5 volt. Vo equals to 5 volt. Let, and this is a condition for off now, means when Vi is greater than 5 volt, diode is on. जब डायोड ऑन होगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऑन 2.5 5 वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट, ये 2.2 किलो ओम, और ये हो गया Vi, और ये हो जाएगा आपका Vo। इस केस में आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। और जब आप देखोगे तो ये ब्रांच और ये पैरेलल है, तो क्या आएगा, Vo इक्वल्स टू Vi, Vo equals to Vi, Vo equals to Vi. Hence the option D is the right answer. क्यों? क्योंकि देखो जब डायोड ऑफ था तो Vo equals to 5 वोल्ट मिला, जब डायोड ऑफ था तो Vo equals to क्या मिला, 5 वोल्ट। See here, Vo equals to 5 volt. In option D only it's given. और जब ऑन था तो Vo equals to Vi as it is. Hence the option D is the right answer. Hence option D is the right answer. See, एक बार फिर से देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, जब डायोड ऑफ है, तो Vo equals to 5 volt. Here it is a 5 volt. और जब ऑन है तो Vo equals to Vi as it is. Option D is right answer. If anybody have a doubt, please ask me. This is very simple and easy question. This is very simple and easy question. आप इस तरीके से इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, ये फिगर, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट जो सेशन है वो काफी इंटरेक्टिव है, सॉल्यूशंस हैं काफी इजी हैं, शॉर्टकट्स टेक्निक है। दिस इज ओनली शॉर्टकट टेक्निक. If you will go by the standard methods, okay, it will take a lot of time, minimum 10 minutes. But if you will follow this shortcut technique, you can give the answer in just 30 seconds. And such interactive sessions is provided by the GATEFORUM. Okay, please note down this. Next, we'll go for next question. Okay. This question, we'll go towards this question. See, this question is very critical question. Okay. This is a question.
For the circuit shown below, the cut-in voltage of diode is V gamma equals to 0.7 volt. 0.7 volt. The plot of V naught versus VI is, the plot of V naught versus VI is, okay. How we will solve this? This is very easy and simple numerical. Okay. Now, see, I'm taking this figure here. Okay. This is the N side of the diode, and this is the P side of the diode. What is given in the question? Diode is practical diode, cut-in voltage 0.7. This is VN, means this point to ground. If you will open the diode, what happened? This is open circuited, and if the diode is open circuited, the circuit will look like this. Okay. This is Vn and this is Vp. At this point voltage, how we will calculate? Means this Vn will be total 15 voltage by using voltage division rule into 1 divided by 2 plus 1. This is 5 volt. If anybody have a doubt, please ask me. This will be the 5 volt. Okay. Now see. Now this Vi is appearing here because there will be no any current flowing through this 1 kilo ohm. Why the current will not, current क्यों नहीं flow होगा? क्योंकि ये open circuit है. क्योंकि ये open circuit है, तो यहाँ कितना आएगा? Vi, as it is the Vi will appear here. यहाँ Vi appear होगा और यहाँ Vn मिला. तो जब हमने डायोड को ऑफ माना है, तो क्या होगा? This is N, तो Vp is less than Vn. ओके. एंड डायोड को प्रैक्टिकल डायोड दिया ना, तो प्रैक्टिकल डायोड कब ऑफ होता है? प्रैक्टिकल डायोड कब ऑफ होता है? When Vp minus Vn is less than 0.7 volt, then the practical diode will be off, reverse bias. Vp कितना है? Vi. Vn कितना है? 5 volt. Less than 0.7 होगा, तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा. Just a minute. ऑफ होगा. इसका मतलब Vi क्या होगा? जब लेस देन 5.7 होगा तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा. डायोड क्या होगा? ऑफ होगा. इस केस में when Vi is less than 5.7 volt, diode will be off. Diode will be off. और जब डायोड ऑफ होगा तो Vo इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ Vo है ना, Vo equals to, therefore Vo equals to Vi. Directly we can say that Vo equals to Vi. Vo equals to Vi. When the diode is off, diode कब तक ऑफ होगा? When less than 5.7 volt. Means if you will plot the graph transfer characteristic, see here in the option 5.7. 5.7 is given in two options. 5.7 and this is 5.7. Okay, 5.7, 5.7 and this is 5.7. ऑप्शन, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो Vo इक्वल्स टू क्या होगा? Vi होगा. तो ये देखिए लीनियर ग्राफ को फॉलो कर रहा है. Vo इक्वल्स टू Vi.
यानी कि अब तक जो आपने केस 1 सॉल्व किया है डायोड को ऑफ करके, तो समझ में आया है कि यहां से ऑप्शन ए या सी हो सकता है, बी और डी गलत है। अब हम चेक करते हैं आगे के लिए। ऑप्शन सी या डी। तो यहां से देखेंगे जब ये ऑन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When Vi is greater than, when Vi is greater than 5.7 volt, then the diode will be on. तब डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। In Vi case 2, when Vi is greater than 5.7 volt, diode will be on. और ऑन होगा तो क्या होगा, ये अब शॉर्ट सर्किट होगा। और मुझे यहाँ पे केवीएल लगा देना है V0 के लिए या V1 के लिए, आप जिसके लिए भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, if you will go through this method, see here, diode will be on. Then if you will solve this up to this point voltage, it is 1 volt. So see here, VO will be 0.4 VI plus 3.42. This will be the value. If you will draw the equivalent circuit and solve, if you draw the equivalent circuit and solve the entire question, we'll get this type of concept. Okay. And by seeing this equation, we can say option C, if you put the values and calculate, option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Okay, lot of the student will have some doubt here. Sir, how you are calculating this? Okay. See. Next question. We'll move towards the next question. Okay, see here. Copy. I'm pasting this. Okay. This is our next question. These questions are apart from the GATE. They can ask such type of difficult question in GATE examinations. See, how you will solve.
This question is very easy. This question is very easy and very simple. You can solve it if you have a lot of practice, if you have followed each and every lecture of the GATE forum, then you can solve it very easily. See how. Option D is correct. In this, option D is correct, right answer. I am saying the answer, option D is correct. How it is correct? Why it is correct? क्यों सही है और कैसे सही है, ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपको जो आउटपुट वोल्टेज दिया है, क्या बोल रहा है? फॉर द सर्किट शोन गामा ये है, कट इन वोल्टेज है। द वीओ बोल रहा है किसके लिए? जो वीएस का रेंज ये हो, वीएस का रेंज ये हो, -10 से +10 के बीच में। तो बड़ा ही सिंपल है, ये वीएस होगा। जब वीएस ग्रेटर देन 0 होगा तो ये D1 और Vs जब ग्रेटर देन 0 होगा तो D1 क्या होगा? ऑफ होगा। तो D1 जैसे ही ऑफ होगा ओके, जब D1 ऑफ होगा तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। ओके, देखिए, जब V1 ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी Vs ग्रेटर देन 0 होगा तो D1 ऑफ होगा, और जब D1 ऑफ होगा तो ये जो करंट है वो सारा का सारा D2 से फ्लो होगा, और D2 से फ्लो होते हुए ऐसा भी जा सकता है या ऐसा भी जा सकता है। तो ये जो करंट है वो फ्लो होगा 10, ये आइडियल नहीं है तो यहां भी 0.7 हो सकता है। देखिए यहां पे 0.7 होगा तो 10 - 0.7 बाय दिस 10 प्लस दिस 10, ओके, डायरेक्टली ग्राउंड को चला जाएगा वो। तो करंट कैसे फ्लो होगा? कुछ इस लूप से फ्लो होगा। तो मैं इसे आपके सामने लिस्ट आउट करता हूं और आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फॉर Vs greater than 0 when D1 is off, D1 is off, current through D2 is current through D2 is I equals to 10 minus 0.7 divided by 10 plus 10, ये हो जाएगा 0.465 मिली एम्पियर, 465 मिली एम्पियर। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस का होगा, तो आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू हो जाएगा 10 के इंटू I, तो किलो और मिली कैंसल, 10 तो 4.65 वोल्ट। ओके, ओके, इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है? 4.65। अब ये देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या होगा? 4.65 वोल्ट ना। अब समझने की बात यह है कि यहां जब 4.65 वोल्ट है तो यहां वही एम्पियर होगा, और यहां पे इसका मतलब जब Vs
10 और लेस देन 4.65 के बीच में होगा, तब आपको VI ये मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 0 से VS 4.65 के लेस होगा, क्योंकि जैसे ही यहां से ज्यादा होगा तो करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखिए 4.65 तक तो यही आएगा, और जैसे ही ज्यादा हो गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने के कारण डायरेक्ट यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के कारण डायरेक्ट 10 वोल्ट आ, सॉरी जैसे उससे ज्यादा होगा तो 4.65 पे सैचुरेट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इफ एनीबॉडी हैव अ डाउट प्लीज आस्क मी। Okay, next. Okay, next question. See, this type of question is many times asked in a GATE examination. This type of question, whatever I'm going to discuss right now, is multiple times asked in a GATE question. Sorry, GATE examination. Write down the question. The diode in the circuit shown below. The diodes in the circuit shown below have a linear parameter of Vs equals to, sorry, not a Vs, it's a V gamma. V gamma equals to 6 volt and RF equals to 0. RF equals to 0. This is the diode. Okay, 0.5 kilo ohm and 0.5 kilo ohm. V2, V1, D1, D2, 9.5 kilo ohm and 10 volt. VO. Okay, this is a question. Okay, and see the actual question is what? First question I'm discussing. I will discuss 2 or 3 questions here. If V1 equals to 10 volt and V2 equals to 0 volt, then VO equals to what? Option A 8.93 volt. Option B equals to 7.82 volt. Option C equals to 1.07 volt. Option D equals to 2.18 volt. Please solve it.
Okay. Eight 8.93 volt, 7.82 volt, 1.07 volt, and 2.18 volt. Okay, see here how you will solve this question. Please. V gamma equals to 0.6 volt, it's given. RF forward resistance of the diode is 0. First question, V1 is 10 volt, means this is 10 volt now, and this is 0 volt. See here, this 10 volt is appearing here, and this 10 volt is appearing here. Means diode D2 is diode D1 is definitely off. So diode D1 will be off, and D2 will be on, because here we are appearing 0 volt and 10 volt. So diode D1 is on, means short circuit. In this way, this will be short circuit. Short circuit. This is short circuited. Means what happened? Entire current will flow in this way. Here. Okay. And we know that in forward bias diode, the current will be flowing through this here, and the output voltage will be this. So no output voltage will flow here. Entire output will flow through, because we know that हम जानते हैं कि forward bias में क्या होता है, P से N की ओर flow होता है. In forward bias diode, current is always flowing from P side to N side. So the entire current will flow through this. Hence the output voltage will be 0 volt. Hence the output voltage will be but cut-in voltage is what? 0.7 volt is given. Okay. So see, this point to ground, and here it will flow in this way. This is 0, means this is ground. This is short circuited. So what happened? We have to apply some KVL here. We have to apply some KVL here. In this loop, we have to apply the KVL, and voltage drop across here will be V0. It means minus 10 plus 9.5 I plus 0.6 volt diode cut-in voltage, this 0.6 volt, because diode is forward bias, plus 0.5 I (0.94 milliampere). I will be 0.49 milliampere, and this voltage plus this voltage. Therefore, the VO will be 10 minus 9.5 or 0.5. Okay, yeah, this 9.5 into 0.94. 0.94, because this much voltage is V0, na? Means voltage drop across here, you have to minus 0.94. Okay, so 10 minus 9.5 into 0.94, it's a 1.07 volt. It's a 1.07 volt. So please note down this. Please note down this. Okay, please note down this. Okay, next question. If V1 equals to V2 equals to 0,
then output voltage V naught is option A 0.964, option B 1.07 volt, option C 10 volt, option D 0.84 volt, 842 volt. Okay, please solve this. Same circuit. In same circuit, you have to solve this. Or let I am drawing again. Okay. Now see, in this question, each voltage is 0 volt. V1 and V2 both are 0 volt. So, if both is 0 volt, I by 2 and I by 2. Here, see, if this is current I, this will be I by 2 and this will be I by 2. Because if both is 0, means here 10 volt will appear and same current, because the path have equal resistance, means the current will flow equally. I will be divided into two parts, I by 2 and I by 2. दोनों part में वो equally divide होगा. Therefore, can I say ID1 equals to ID2 equals to I by 2. And if you apply the KVL, it will be a 10 equals to 9.5 I plus 0.6, 0.5 I by 2. Therefore, I equals to 0.964 milliampere, because the resistance in kilo ohm. In this way, we can solve it. We have applied the KVL in this loop. Then the V naught will be 10 minus 9.5 into 0.964, and it is equals to 0.842 volt, 824 volt. This is a concept. ओके, तो यहां से ये समझ में आता है कि डायोड के प्रॉब्लम इस टाइप के हैं, और इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा. और अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्रैक्टिस करिए, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए. ओके, इसे आपको समझना चाहिए. और
यदि ये वीडियोस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो काफी इंटरेक्टिव था सेशन और काफी हमने शॉर्टकट्स सीखने की कोशिश की। और यदि आप पूरा डीप शॉर्टकट्स अच्छे से शॉर्टकट्स जानना चाहते हैं हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो प्लीज गेट फॉरम के जो ई-गेट लेक्चर्स है उसे ज्वाइन करिए और हाईली इंटरेक्टिव सेशंस पे हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक को लेके। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बीजेटी। नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा बीजेटी। बीजेटी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स लेके आएंगे। ओके So today we'll end the session here, and in next session we'll start with BJT. Thank you very much.